In today's lecture, we shall study the damped harmonic oscillator. अभी तक जो हमने study किया, that was undamped harmonic oscillator. That was an ideal case. उसमें हम frictional forces को all together neglect करते थे. लेकिन actual practice में there are always frictional forces present. जिस भी सिस्टम को हमने ऑसोलेट कराना है तो मोर ऑफन वो एयर में ऑसोलेट होगा, तो एयर रेजिस्टेंस इज देयर. इसी तरह अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो स्प्रिंग को जिस पॉइंट पे हम अटैच करेंगे किसी फिक्स्ड सपोर्ट के साथ तो वहां पे फ्रिक्शन होगी. अगर सिंपल पेंडुलम है तो जिस जगह पे हम इसको सस्पेंड करेंगे वहां पे फ्रिक्शन होगी. सो देयर आर वेरियस डिसिपेटिव फोर्सेस जो कि ऑसिलेटिंग सिस्टम की एनर्जी को कंटिन्यूअली ड्रेन आउट करते हैं. तो उससे क्या होता है कि जो ऑसिलेटिंग सिस्टम का एम्पलीट्यूड है दैट डिक्रीजेस विद ईच ऑसिलेशन एंड फाइनली स्टॉप्स. तो आज हम वो ऑसिलेशंस स्टडी करेंगे. तो इसके हम कुछ केसेस भी देखेंगे. अंडर डैम्प्ड, नंबर 2 क्रिटिकली डैम्प्ड, नंबर 3 ओवर डैम्प्ड, और हम इनकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देखेंगे. तो व्हाट इज डैम्पिंग? अगर ऑसिलेटिंग सिस्टम में कोई डिसिपेटिव फोर्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन, तो ये डिसिपेटिव फोर्स हर साइकिल में, हर ऑसिलेशन में ग्रेजुअली ऑसिलेटिंग सिस्टम की एनर्जी को ड्रेन आउट करता है. तो इससे ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड्स पे क्या असर पड़ता है? द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस. दिस डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड डैम्पिंग. तो ऐसी ऑसिलेशंस को हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं. The oscillations in which the amplitude decreases with each oscillation. Such oscillations are called damped oscillations. और जो dissipative force है which is responsible for this damping is called the damping force. तो इसका हम special case लेंगे when the dissipative force is proportional to velocity. So FD, capital F with a subscript D, it stands for dissipative force and it will be proportional to velocity. एक और चीज है कि dissipative force जो है ये frictional force होता है, it always opposes motion. तो यहाँ पे हमने माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा हमें. तो it is proportional to velocity. तो oscillating system की velocity जितनी ज्यादा होगी तो ये dissipative force भी इसका मैग्नीट्यूड भी उतना ज्यादा होगा. एंड दिस माइनस साइन व्हिच इज हियर, इट इंडिकेट्स दैट द फोर्स अपोजेस द मोशन. तो इसको हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे. तो वी विल राइट एफ डी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वी. तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करेंगे, स्मॉल b. सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड हियर a proportionality constant, and this proportionality constant is called the damping coefficient. तो मैथमेटिकली अगर हम खाली damping coefficient का मैग्नीट्यूड देखना चाहें तो mod of b will be equal to b के साथ v velocity product में है, that will get divided to 4, so we'll get fd by v. तो यहां से हम डैम्पिंग कोएफिशिएंट को डिफाइन भी कर सकते हैं. कैसे? कि इट इज द रेशियो ऑफ डैम्पिंग फोर्स टू वेलोसिटी. सो डैम्पिंग कोएफिशिएंट में बी डिफाइंड एज डैम्पिंग फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी. इसी इक्वेशन से हम डैम्पिंग फोर्स का SI यूनिट भी डिटरमाइन कर सकते हैं. इट विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर में है फोर्स तो उसका SI यूनिट है न्यूटन, डिवाइड डिनोमिनेटर में है वेलोसिटी, उसका SI यूनिट है मीटर पर सेकंड. So this second will go into numerator. So we will get Newton
into second per meter. Now this force itself, it is mass times acceleration. तो मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो न्यूटन कैन बी आल्सो रिटन एज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वो मैं यहाँ पे यूज करूंगा. सो न्यूटन की जगह आई विल राइट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर टाइम्स इसके साथ प्रोडक्ट में क्या है सेकंड पर मीटर. So meter and meter will cancel in numerator and denominator. यहाँ पे सेकंड का एक पावर है, ये डिनोमिनेटर में सेकंड के एक पावर को कैंसिल करेगा. तो न्यूमरेटर में बचता है किलोग्राम और डिनोमिनेटर में सेकंड. So we can say that the SI unit of damping coefficient is kilogram per second. Now let us see what are the various forces acting on a damped harmonic oscillator. तो पहले हम damped harmonic oscillator बनाएंगे. We will take a horizontal support. स्प्रिंग का एक एंड हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ अटैच करेंगे और उसका जो दूसरा फ्री एंड है तो उसके साथ हम एक बॉडी अटैच करेंगे एंड दैट विल बी हैविंग सम मास m. तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या है इलास्टिसिटी. And its elasticity is represented by its spring constant, which is also called as the force constant, and it is denoted with K, small letter K or kappa. और जो बॉडी है जिसका मास है m, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? Its property is inertia, and that inertia is represented by its mass m. तो जब दोनों प्रॉपर्टीज होंगी सिस्टम में, इलास्टिसिटी भी होगी और इनर्शिया भी होगा, तभी एक सिस्टम ऑसिलेट करेगा. इलास्टिसिटी से क्या होता है कि जब एक एक्सटर्नल फोर्स इसको डिस्प्लेस करेगा तो इलास्टिसिटी सिस्टम को अपनी मीन पोजीशन पे रेस्टोर करने की कोशिश करेगा. इनर्शिया से क्या होगा कि बिकॉज ऑफ द मोशन जो ये सिस्टम है ये डिस्प्लेस्ड पोजीशन से जब अपनी मीन पोजीशन पे आएगा तो वहां पे नहीं रुकेगा बल्कि ओवरशूट करेगा टू अदर साइड. तो दैट इज हाउ ऑसिलेशंस विल टेक प्लेस. लेकिन इसमें हम एक और चीज ऐड कर रहे हैं. द मास m लाइज इन अ विस्कस फ्लूइड. तो इट लाइज इन अ वेसल व्हिच कंटेन्स सम विस्कस फ्लूइड. इट कैन बी सम ऑयल. तो उसके बाद हम इस मास को ऊपर या नीचे डिस्प्लेस करेंगे फिर छोड़ देंगे तो इट विल एग्जीक्यूट ऑसिलेशंस इन वर्टिकल डायरेक्शन लाइक दिस. तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो सिस्टम है ये ऑसिलेट तो करेगा बट विद ईच ऑसिलेशन द एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज एंड फाइनली द सिस्टम विल कम टू अ रेस्ट. सो लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. On the system. Number one, there is restoring force because of this spring, and that restoring force equals minus K times X, where K is the spring constant, also called force constant, and X is the displacement. Now another force is the damping force because the body of mass m is moving in a viscous medium, so it will apply a damping force and that damping force will be equal to minus b times v, where b is the damping coefficient and v is velocity. तो इस velocity को हम लिख सकते हैं. So this will be equal to minus b. अब जो ये velocity है इसको हम लिख सकते हैं as the first differential coefficient of displacement. So these are the two forces acting on the oscillating system. So the net force will be equal to damping force plus the restoring force. तो इन दोनों के लिए हम expression substitute करेंगे. We will get minus b times dx by dt and then minus k times x. So that is the net force which is acting on the body. यहाँ पर हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे
कि mass times acceleration equals net force acting on a body. तो बॉडी का जो मास है that is m into acceleration, that can be written as the second differential coefficient of displacement. So d square x by dt square equals net force, that is minus b dx by dt minus k times x. In the next step, we will divide by mass on both sides. So left hand side पे mass and mass will go. So we will get on left hand side d square x by dt square. और जो राइट हैंड साइड पे ये दोनों टर्म्स हैं, इनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो इनके साइंस पॉजिटिव बनेंगे. वी विल गेट प्लस b by m dx by dt प्लस एक और टर्म क्या है, k by m times x, and this whole thing is equal to 0. We will call this equation number 1. Equation number 1 is the differential equation of a damped harmonic oscillator. Okay, we can make a little bit substitutions to make this equation 1 mathematically easy to solve. So b by m, this is ratio of two constants, so we can put that equal to twice some another constant p, and जो k by m है इसको हम equate करते थे to omega square, where omega was the frequency of oscillations, लेकिन यहाँ हम इसको ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर रखेंगे. दिस ओमेगा नॉट, इसको हम कहेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस. नेचुरल फ्रीक्वेंसी मीन्स वो फ्रीक्वेंसी जिसके साथ ये ऑसिलेटिंग सिस्टम ऑसिलेट करता अगर डैम्पिंग फोर्स प्रेजेंट नहीं होता. तो जब हम ये सब्स्टिट्यूशंस इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे तो वी विल गेट d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर प्लस b बाई m की जगह ट्वाइस p dx बाई dt प्लस k बाई m, इसकी जगह ओमेगा नॉट स्क्वायर टाइम्स x is equal to 0, and we will call this equation number 2. So the both equations, equation number 1 and equation number 2, they are the differential equations of a damped harmonic oscillation. So this is the equation. It's a well-known equation in mathematics. So इसको हम यहाँ पे solve नहीं करेंगे. We will write its solution directly. So equation 3 gives the solution of equation number 1. X stands for displacement. Displacement of damped harmonic oscillator. This whole a times exponential function of minus b by 2mt, this denotes amplitude of the damped harmonic oscillator. Then bracket a constant times exponential function of under root b square by 4m square minus k by m times t plus another constant c2 times exponential function of minus under root b square by 4m square minus k by mt. ये जो b स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर है, इट इज अ मेजर ऑफ इफेक्ट ऑफ द डैम्पिंग फोर्स. और ये जो k बाई m है, दिस इज द मेजर ऑफ इफेक्ट ऑफ द रेस्टोरिंग फोर्स, एंड दे ऑलवेज अपोज. तो
ये डिपेंड करता है कि दो फोर्सेस में से किसका इफेक्ट डोमिनेंट रहता है। तो यहां पर जो ये A है, दिस A, इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस। अगर डैम्पिंग फोर्स नहीं होता तो कैपिटल A is the amplitude of oscillations in the absence of the dissipative forces. So the actual amplitude of damped harmonic oscillation is A times e raised to power minus B by 2m times t. तो इसमें हम देखते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन. It is the constant amplitude times exponential function of minus some constant times t. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम टाइम इंक्रीज करेंगे, टाइम विल फ्लो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके साथ यहाँ पे माइनस साइन है, दिस होल एक्सपोनेंशियल फंक्शन विल डिक्रीज, तो कॉन्सिक्वेंटली एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड oscillations will also decrease, and that too exponentially with time. Let us take a few special cases. Special case number 1, underdamping. So when B square by 4m square, इसको हम कंपेयर करेंगे with k by m. तो लेफ्ट हैंड साइड पे b स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर, इट इज अ मेजर ऑफ इफेक्ट ऑफ द डैम्पिंग फोर्स, और राइट हैंड साइड पे k by m, इट इज द मेजर ऑफ इफेक्ट ऑफ द रेस्टोरिंग फोर्स. इफ b स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर इज लेस देन k by m, तो इसका मतलब है कि डैम्पिंग फोर्स भी अपना इफेक्ट दिखा रहा है और रेस्टोरिंग फोर्स भी अपना इफेक्ट दिखा रहा है. तो रेस्टोरिंग फोर्स सिस्टम को ऑसिलेट कराना चाहता है और डैम्पिंग फोर्स इसको स्टॉप कराना चाहता है, लेकिन यहां पे हम डैम्पिंग फोर्स का इफेक्ट कम रखते हैं एज कंपेयर टू द इफेक्ट ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स. तो यहां से हमें क्या एक्सप्रेशन मिलेगी, यहां पर m का एक पावर है, वो इसके एक पावर को कैंसिल करेगा. यहां पे हमें b स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी, इट विल बी लेस देन 4 टाइम्स mk. तो यहां पे हम स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स. सो स्क्वायर रूट, तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर एंड रूट विल गो. सो b लेस देन 4 का रूट आएगा ट्वाइस, देन अंडर रूट m टाइम्स k. So if this is the condition that damping coefficient is less than twice under root of mass times spring constant, the damping is weak, and it is so weak कि हर साइकिल में स्मॉल फ्रैक्शन एनर्जी की लॉस्ट होती है. सो दैट मीन्स कि ऑसिलेशंस होते हैं. दिस इज कॉल्ड अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन. तो अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन इज द कंडीशन जिसमें डैम्पिंग ऑफ द ऑसिलेटर कॉजेज इट टू रिटर्न टू इक्विलिब्रियम पोजीशन with the amplitude gradually decreasing and finally become to zero. लेकिन सिस्टम जो है ये ऑसिलेट करता है. और एक और चीज, the system returns to equilibrium faster as compared to that of the undamped condition. लेकिन ये ओवरशूट करता है and it crosses to the opposite side, और ये कई बार ऑसिलेट करता है बिफोर कमिंग टू अ halt. The displacement of an underdamped simple harmonic oscillator is given by this expression. A is the amplitude without damping force. A times this exponential function is the amplitude with damping force. This is amplitude of damped oscillations, and it decreases exponentially with time. लेकिन इसके साथ हम साइनोसाइडल फंक्शन भी लिखते हैं बिकॉज द सिस्टम डज ऑसिलेट.
लेकिन साइन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नॉट नहीं है, बल्कि वो ओमेगा प्राइम है. सो इन अंडर डैम्प्ड कंडीशन द सिस्टम ऑसिलेट्स विद सम अदर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम ओमेगा प्राइम से डिनोट करते हैं. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट. इसको हम graphically plot करेंगे. Along horizontal axis we plot time, along vertical axis we are plotting displacement. तो in the under damped condition system oscillate तो करता है. You can see ये पहले एक extreme position पे था, then it reaches mean position, goes to other side extreme position, comes back to mean position, crosses over, goes to the positive side, and the cycle continues. But you can see जो amplitude of oscillations है वो हर cycle के साथ decrease हो रहा है, and finally it will come to stop after some time. तो under damped condition में the frequency of oscillation is given by omega prime equals under root of k by m minus b square by 4m square. तो इसको हम लिख सकते हैं k by m which is omega naught square minus b square by 4m square. तो अगर डैम्प्ड फोर्स नहीं होता तो b 0 होता, तो ये दूसरी टर्म भी 0 होती. सो दिस वुड हैव बीन देन ओमेगा नॉट स्क्वायर एंड रूट, स्क्वायर और रूट खत्म होता तो हमें ओमेगा प्राइम मिलता ओमेगा नॉट. तो इन द एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्स द फ्रीक्वेंसी विल बी द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. लेकिन चूंकि डैम्पिंग फोर्स है तो ओमेगा नॉट स्क्वायर को कुछ ना कुछ सबट्रैक्ट हो रहा है. तो इट मीन्स that omega prime will be definitely less than omega naught. So the angular frequency of an underdamped harmonic oscillator is not equal to its natural frequency but is smaller. The energy of a damped harmonic oscillator after time t is given by E is equal to E is the energy of a damped harmonic oscillator after time t. So it depends on time. This equals E naught exponential function of minus t divided by tau. Here E naught is the energy of the oscillator जब damping force absent होता है. So you can see the energy of a damped harmonic oscillator decreases exponentially with time. अगर हम इसमें t का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, time will flow, the energy will decrease and that too exponentially. तो इसमें जो ये कांस्टेंट हमने रखा है tau, it denotes the decay time. It is also called time constant. तो इसकी डेफिनेशन ये है कि टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट टाइम आफ्टर विच एनर्जी ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज ड्रॉप्ड टू 1/eth ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. तो लेट टाइम t इज इक्वल टू tau. तो इस इक्वेशन में हम टाइम वी विल पुट दैट इक्वल टू डिके constant या decay time. So we will get E is equal to E naught into e raised to power minus t की जगह tau divided by tau. So this will be equal to E naught times e raised to power minus 1. तो इस e raised to power minus 1 को हम नीचे ले जाएंगे तो इसका पावर बनेगा +1. So E naught divided by E. So which implies E equals 1/e times E naught. So this decay time or the time constant is time after which energy becomes 1/eth of its initial value. Let us consider the second case, which is the
क्रिटिकल डैम्पिंग। अगर कंडीशन ये हो कि बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर और के बाई एम ये दोनों बराबर हो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे है बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर, दैट गिव्स अस मेजर ऑफ द इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स चाहता है कि सिस्टम मूव ना करे। राइट हैंड साइड पे है k बाई एम विच इज द मेजर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द रेस्टोरिंग फोर्स, जो चाहता है कि सिस्टम ऑसिलेट करे। व्हेन बोथ आर इक्वल, तो दिस m और यहाँ पे m का एक पावर कैंसिल होगा, तो वी विल गेट b स्क्वायर इक्वल्स 4m, राइट हैंड साइड पे जाएगा, सो 4mk, let us take square root on both sides, so we will get square and root will go, so b equals 4 का root आएगा twice, then under root m times k. So when the damping constant exactly equals twice root of mass times spring constant, then the effect of damping force is exactly equal to that of the spring force. तो ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट नलिफाई करेंगे, इसको हम क्रिटिकल डैम्पिंग कहते हैं। सो क्रिटिकल डैम्पिंग में जब सिस्टम को डिस्प्लेस किया जाए और उसको छोड़ा जाए, तो इट रिटर्न्स टू इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट विदाउट अंडरगोइंग एनी ऑसिलेशन, and it returns to its equilibrium position within no time, swiftly. तो क्रिटिकल डैम्पिंग में कोई ऑसिलेशन होती ही नहीं है। अगर हम सिस्टम को मीन पोजीशन से मान लीजिए राइट साइड में डिस्प्लेस करें फिर छोड़ दें, तो ये सिस्टम विद नो टाइम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा और ओवरशूट भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि क्रिटिकल डैम्पिंग में ऑसिलेशन होती ही नहीं है। So the critical damped oscillation is the condition in which the damping of an oscillator causes it to return as quickly as possible to its equilibrium position without oscillating. तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, जो ब्लू कलर में है कर्व ए, इट डिनोट्स अंडर डैम्प्ड कंडीशन। जो रेड में कर्व है डिनोटेड बाय बी, दिस डिनोट्स क्रिटिकल डैम्पिंग। So you can see when time t is equal to 0, initially हमने ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से यहां तक डिस्प्लेस किया था, so this was its amplitude, और फिर हमने इसको छोड़ दिया, तो it goes along curve B, तो it reaches its equilibrium position in this time and then stops. तो ऑसिलेशन नहीं होती है। तो क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स हो जो सिस्टम को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम मीन पोजीशन, तो क्रिटिकल डैम्पिंग में ये सिस्टम विद इन नो टाइम वापस अपनी मीन पोजीशन पे आता है। तो इसकी एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है शॉक एब्जॉर्बर। ये गाड़ी, हर गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर होता है, ये इसका व्हील है, तो व्हील के साथ ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, दिस गोज टू एक्सल, जो इस व्हील को रोटेट कराता है। लेकिन शॉक एब्जॉर्बर ये है, जो ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक रॉड है और रॉड के बाहर एक कॉइल स्प्रिंग होती है। तो शॉक एब्जॉर्बर्स प्रोवाइड ए वेलोसिटी डिपेंडेंट डैम्पिंग फोर्स। तो जब गाड़ी किसी बम्प के ऊपर से मूव करे, मिसाल के तौर पे कोई स्पीड ब्रेकर है, तो ये जो टायर है ये ऊपर चला जाएगा, तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारा स्प्रिंग है ये कंप्रेस हो जाएगा। तो कंप्रेस होने का फायदा ये है
कि जो गाड़ी का अपर पोर्शन है, जिसमें इंजन होता है, जिसमें पैसेंजर्स होते हैं, तो उनकी जो लेवल है वो फिक्स्ड रहती है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिर्फ ये टायर थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस होगा और ये स्प्रिंग थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस होगा, लेकिन जो गाड़ी का जो अपर पोर्शन है जिसमें पैसेंजर्स हैं वो अपनी लेवल पे रहेंगे। लेकिन अब चूंकि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है बिकॉज ऑफ बम्प, जो ये स्प्रिंग है ये अब ऑसुलेट करना चाहेगा, तो ये इट शुड नॉट ऑसुलेट। ये एक बार ऊपर को डिस्प्लेस हुआ यानी कंप्रेस हुआ, नाउ इट शुड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इसके लिए हम क्रिटिकल डैम्पिंग यूज करते हैं। दिस इज इनसाइड ऑफ द रॉड, जिसके बाहर आप यहां पे देखते हैं कि इसके बाहर एक स्प्रिंग अटैच है, तो इसके अंदर एक रॉड होता है। इस रॉड में एक पिस्टन नीचे लगा है और पिस्टन में छोटे छोटे होल्स हैं, एंड दिस होल थिंग इज इमर्स्ड इन ऑयल और सम अदर विस्कस फ्लूइड। तो बिकॉज ऑफ दिस पिस्टन विद होल्स, दिस फ्लूइड exerts damping force on it, and for optimal passenger comfort the system should be critically damped। कि एक बार टायर ऊपर चला गया, ये स्प्रिंग भी ऊपर को डिस्प्लेस हुआ, नाउ इट शुड कम बैक टू इट्स मीन पोजीशन एंड दैट्स इट। फर्दर ऑसिलेशन नहीं होनी चाहिए। तो शॉक एब्जॉर्बर्स यूज क्रिटिकल डैम्पिंग। केस थर्ड इज ओवर डैम्पिंग। हम फिर से कंपेयर करेंगे b स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द डैम्पिंग फोर्स। इसको हम कंपेयर करेंगे विद k बाई m। k बाई m is the effect of the restoring force, and supposing this time b square by 4m square is greater than k by m, तो यहाँ पे m का एक पावर है वो इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा। we will get b square is greater than 4 times mk। let us take square root on both sides। तो लेफ्ट हैंड साइड पे b का स्क्वायर एंड रूट ये हट जाएंगे, तो b will be greater than 4 का रूट आएगा twice under root m times k। so when this is the condition that damping coefficient is greater than twice under root mass times spring constant, so the effect of damping force is greater than the effect of the spring force। तो स्प्रिंग फोर्स तो ऑसिलेट कराता, लेकिन डैम्पिंग फोर्स इसको स्टॉप कराना चाहता है, एंड डैम्पिंग फोर्स ही डोमिनेंट है यहाँ पे। इसको हम ओवर डैम्पिंग कहते हैं। और ओवर डैम्पिंग में अगर हम सिस्टम को डिस्प्लेस करें, एक्सटर्नल फोर्स इसको डिस्प्लेस करे और फिर रिलीज करे, the system returns to its equilibrium state without oscillating। तो oscillation नहीं होती है, but as compared to critical damping, ओवर डैम्पिंग में ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में आता है, बट स्लोली। इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू रिटर्न टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो ओवर डैम्प्ड कंडीशन को हम डिफाइन करेंगे, इट इज द कंडीशन इन विच damping of an oscillator causes it to return back to its equilibrium position without oscillating, but the oscillator moves more slowly towards the equilibrium position than in the critically damped situation। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे along vertical axis, we are plotting displacement, along horizontal axis we are plotting time। तो here time is equal to 0 at the origin। तो हम देखते हैं कि इनिशियली हमने एक सिस्टम को अपनी मीन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेस किया है। सो दिस इज द इनिशियल एम्पलीट्यूड। जो ब्लू कर्व है, कर्व ए, इट डिनोट्स अंडर डैम्प्ड कंडीशन, सो दिस इज अंडर डैम्पिंग। जो कर्व बी है इन रेड, it denotes critical damping। For critical damping में the system returns to its mean position fast।
और जो कर्व C है which is in black, this represents or this denotes overdamping. और इसमें भी सिस्टम ऑसिलेट नहीं कर पाता है. It returns from its deformed position, from its displacement position. So in case of overdamping condition, system oscillate नहीं करता है. It returns to its mean position from displaced position, but it takes a longer time to return to its equilibrium position. Let us see what is the energy of an undamped harmonic oscillator, यानी जिसमें कोई damping force present ना हो. तो इसकी एनर्जी को हम E नॉट से डिनोट करेंगे, मीन्स इट रिमेन्स कांस्टेंट, और इट इज एनर्जी अप टू T इज इक्वल टू 0, बिकॉज T इज इक्वल टू 0 पे हम डैम्पिंग फोर्स ऑन करेंगे. सो E नॉट ये हमने देखा है, दिस इक्वल्स 1/2m ओमेगा स्क्वायर A square. Now here m, it is mass of the oscillating body, and this omega, it is called a natural frequency of the harmonic oscillator. It is frequency of the oscillations in absence of any damping force, and similarly this A, it is amplitude of the oscillations, again in absence of any damping force. So E naught stands for energy of an undamped harmonic oscillator. एक ऐसा oscillating system जिसमें कोई damping force exist नहीं करता है. Now let us see what can be expression for energy of a damped harmonic oscillator. In the presence of a damping force given by minus B times V, where B is the damping coefficient and V is velocity, the amplitude decays with time as the amplitude of a damped harmonic oscillator is given by A times exponential function of B by 2m times T. So obviously the amplitude decreases exponentially with time. So the energy of the damped oscillator will be E is equal to 1/2m omega square into amplitude ka square. The amplitude of the damped harmonic oscillator, uska square. So this will be equal to 1/2m ओमेगा स्क्वायर. तो अब हमें इस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लेना है, तो वी विल गेट ए स्क्वायर. सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी स्क्वायर माइनस बी बाई 2m टाइम्स टी, इसका स्क्वायर. दिस 2 and 2 will go, so we will get expression for energy as 1/2m omega square A square into exponential function of minus B by m into T. Now this 1/2m omega square A square, this is energy of the undamped oscillator. So we can write E equals E naught into exponential function of minus B by m times T. So this is expression for energy of a damped harmonic oscillator. और यहां से हमें ये पता चलता है that the energy of a damped harmonic oscillator decays exponentially. यहां पर देखें कि exponential term है, there is exponential term, और इसके साथ इसके पावर में माइनस साइन है और t टाइम है. So that means with time this exponential function decreases. Hence, the energy of a damped oscillator decreases exponentially with time.
और एक और चीज के the larger the value of damping coefficient इस exponential function के यहाँ पावर में देखें, अगर हम इस damping coefficient b इसका वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज ज्यादा होगा, तो more rapid the decay of the amplitude as well as the energy. यहाँ पर हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, logarithmic decrement. It measures the rate at which the amplitude dies away. Suppose in the expression for displacement of a damped harmonic oscillator, which is x is equal to a times exponential function of minus b by twice mt into sine of omega prime. Omega prime is the frequency of damped oscillator times t plus a phase constant phi. Supposing we choose the phase constant of pi by 2, then we will get x is equal to a times exponential function of b by 2m times t into sine of omega prime t plus pi by 2, and sine of any angle plus pi by 2 radians becomes cosine of the angle. So this will be equal to a times exponential function of b by 2mt into cos of omega prime t. तो obviously when t is equal to 0, अगर हम इसमें t का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर भी, so this exponential function will become 1, और अगर हम यहां पर भी t का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे cos of 0 radian again equals 1, so that means x at t is equal to 0, जिसे हम कहेंगे x of 0, that will be equal to a. So initially the oscillator is at the extreme position and its displacement equals amplitude. So the amplitude equals a times exponential function of minus b by 2m times t. So supposing the period of oscillation of the damped oscillation is t prime, then एक पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो एम्पलीट्यूड है दैट विल बी, उसको मैं a1 से डिनोट करूंगा. a1 इज द एम्पलीट्यूड आफ्टर वन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी इक्वल टू a इंटू e रेज टू पावर माइनस b बाई 2m, और यहां पर जो ये टाइम है उसकी जगह में एक टाइम पीरियड यूज करूंगा ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशन, सो t प्राइम. तो यहां से हम a1 और a का रेशो लेंगे, यानी जो एम्पलीट्यूड है ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे. सो वी विल गेट a1 बाई a इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ माइनस b बाई 2m टाइम्स t प्राइम. लेट अस टेक रेसिप्रोकल. तो we will get a by a1 is equal to, तो राइट हैंड साइड पे रेसिप्रोकल लेने से ये माइनस साइन हट जाएगा. सो we will get exponential function of b by 2m into t prime. Let us use b by 2m times t prime is equal to delta, and this delta is called logarithmic decrement. तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगी that a by a1 is equal to e raised to power delta, and let us call this as equation number 1. Let us take natural log of equation number 1. So we will get ln of a by a1 is equal to ln of exponential function of delta.
Now natural log and exponential, they are inverse functions of each other. So we will get only delta here. So we get natural log of a by a1 is equal to delta. तो हम इस इक्वेशन से लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि the logarithmic decrement is the logarithm of ratio of two amplitudes of oscillation. तो इसमें हम natural log लेते हैं of ratio of two amplitudes a by a1. Now a is amplitude initially and a1 is amplitude after one oscillation. So the logarithmic decrement is the logarithm of ratio of two amplitudes of oscillation which are separated by one period. और न्यूमरेटर में हम a लेते हैं, डिनोमिनेटर में a1. A is the initial amplitude, a1 is amplitude after one oscillation. और चूंकि ये damped harmonic oscillation है, तो with each oscillation the amplitude decreases. यानी कि A is the larger one, A is greater than A1. This is our equation number 1. Similarly, we can write A by A2. A is the initial amplitude and A2 is the amplitude after two oscillations. So this will be equal to exponential function of b by 2m. और यहाँ पर टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है, that time will be 2 time periods. And this will be equal to exponential function of twice b by 2m times t prime. अब ये जो ब्रैकेटेड टर्म है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ 2 और ये जो ब्रैकेटेड टर्म है वी हैव केप्ट दैट इक्वल टू लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट. तो वी गेट a by a2 is equal to exponential function of twice delta. तो दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर में कितने पीरियड के बाद वाला एम्पलीट्यूड हम यूज करेंगे, तो उसका जो ऑर्डर होगा, उसका जो नंबर होगा, वही नंबर हमें यहाँ लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट के कोएफिशिएंट में यूज करना है. इसी तरह हम एनालॉगसली लिख सकते हैं दैट a by an equals where an is amplitude after n oscillations. This will be equal to exponential function of n times delta. Let us call this equation number 2. Experimentally, the value of this delta is found best by comparing amplitudes of oscillations which are separated by many periods, not just 1, 2, or 3 periods. If we take natural log of equation number 2, we will get natural log of a by an equals natural log of exponential function of n times delta, which implies left hand side will be as such. Natural log of a by an equals right hand side pe natural log and exponential, they nullify each other's effective, so we get n times delta. We define another term and it is called relaxation time or the modulus of decay. Relaxation time, इसको हम Greek letter tau से denote करते हैं and we define it as the time after which the energy of a damped harmonic oscillator has dropped or decreased to 1 by eth of its original value. कितने टाइम के बाद जो इनिशियल एनर्जी हमने सिस्टम में इनपुट की थी that has dropped to 1 by e times that value. The energy of a damped oscillator after time t is given by E equals
E naught into exponential function of minus B by M times T. And this is our equation number 4. By definition, अगर हम इसमें टाइम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इक्वल टू द डिके कांस्टेंट, then the energy will have dropped to 1 by E times the original value. तो जब हम ये दोनों इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, we will get लेफ्ट हैंड साइड पे E है, उसकी जगह हमने यूज करना है 1 by E times E naught equals E naught into exponential function of minus B by M into time. Time की जगह हमने यूज करना है the relaxation time. E naught and E naught will go. In the next step हम इस exponential function को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो इसका जो पावर नेगेटिव है वो पॉजिटिव बनेगा. सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ B by M times tau will be equal to, इसी तरह जो ये E है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा. Let us take natural log on both sides. So ln of exponential function of B by M times tau equals natural log of E. Now natural log and exponential, they nullify each other's effect. So left hand side पे we will get B by M times tau, और राइट हैंड साइड पे we will get only 1. तो यहां से हम tau के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं. tau will be equal to, इसके साथ प्रोडक्ट में है B by M, ये राइट हैंड साइड पे जाके बनेगा M by B. So this is the expression for decay constant. Thus the relaxation time equals what? It equals the ratio of M, mass of oscillator, to B, which is the damping coefficient. Now let us consider a practical example of a damped harmonic oscillator, LCR circuit. Last time हमने LC circuit पढ़ा था and that was undamped. तो आज हमने इसमें एक और element add किया है, that is resistor. And resistor always dissipates energy in the form of heat. So the resistor is the element which gives the damping force. So we consider an LCR circuit. It consists of an inductor of inductance L. Inductor is the physical device. उसकी जो property है, to oppose change in current, that is called inductance and denoted with L. Similarly, another component of the circuit is capacitor. Now capacitor is a physical device, और इसकी जो physical property है capacitance, the ability to store charge, that is denoted with C. और जो तीसरा कंपोनेंट है रेजिस्टर, दैट इज अगेन अ फिजिकल डिवाइस, उसकी जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस टू अपोज फ्लो ऑफ करंट, दैट इज रेजिस्टेंस डिनोटेड विद आर. तो इनिशियली हम इस सिस्टम को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे एंड दैट विल अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस V इनिशियली, फिर हम उस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे. तो there will be potential drop across each component because जो बैटरी ने potential difference apply की उसके हिस्से होंगे. तो there will be voltage across a resistor, there will be voltage across inductor, and there will be also voltage across capacitor. The inductor has inductance L,
the resistor has resistance R and the capacitor has capacitance C. So if there is a current flowing I through the circuit at any instant of time, and there is charge Q on plates of capacitor at that instant, then voltage across inductor will be equal to L times di by dt. The voltage across resistor will be R times the current, and voltage across capacitor will be the charge divided by capacitance. तो अगर हम इस पे किरचॉफ्स रूल अप्लाई करें, there is no source of potential difference in this circuit, so the total sum of potential differences in this circuit should be 0. So that means voltage across inductor plus voltage across resistor plus voltage across capacitor should be equal to 0. Let us substitute the values. So we will get L times di by dt plus now voltage across resistor, that is R times I, plus voltage across capacitor, that is Q by C, is equal to 0. Here we will use that जो current है, it is the first differential coefficient of charge with respect to time. The current is given by the first differential coefficient of charge. तो इस equation में use करेंगे, तो we will get L d by dt of, अब यहाँ पे करंट है तो उसकी जगह हम लिखेंगे dq by dt प्लस r टाइम्स, यहाँ पर भी करंट है तो we will write dq by dt plus then there is 1 by c into charge q, and this whole thing is equal to 0, which implies L times, this is double differentiation of charge with respect to time, so we will write it as second differential coefficient d square q by dt square plus r times dq by dt plus 1 by c times q equals 0. This is the expression which we have got. Let us divide by L on both sides. So we will divide here by L, here divided by L, here divided by L, and here divided by L. So we will get d square q by dt square plus r by L times dq by dt plus 1 by LC times Q, and this whole thing equals 0. Now this is the differential equation of a damped electrical oscillator, LCR oscillator. तो अगर हम इसको कंपेयर करें with the general differential equation of a damped mechanical harmonic oscillator like this, we get जो damped mechanical harmonic oscillator है, इसमें displacement है x, तो LCR circuit में displacement है q. So we get x is equal to q, and this q represents displacement.
उसके बाद हम देखते हैं dx by dt, तो इसका कोएफिशिएंट है b by m, यहाँ पे dq by dt इसका कोएफिशिएंट है r by l. So b by m is equal to r by l. Now this b by m, it represents the effect of the damping force. Then x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे k by m, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है q, तो उसका कोएफिशिएंट है 1 by lc. So we will write that k by m is replaced here by 1 by lc. Now what is k by m? It is the effect of the restoring force. So this is effect of restoring force. So we have got x equals q, b by m equals r by l, and k by m equals 1 by lc. तो जो डैम्प्ड मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन ये है. तो एनालॉगसली we can write expression for instantaneous charge, which is displacement for LCR circuit. So we can write Q is equal to, यहाँ पर है capital A, which is amplitude, that is maximum value of displacement. तो हम यहाँ पे लिखेंगे capital Q. It is the maximum value of charge that can be on the plates of capacitor into exponential function of minus b by 2m times t. तो b by m उसकी जगह हम लिखेंगे r by l. So it is r by 2l times t. Then bracket a constant c1 times exponential function of under root b square by 4m square. तो b square by m square की जगह हम लिखेंगे r square by l square, और 4 भी यहाँ पे है. देन माइनस k by m, उसकी जगह हम लिखेंगे 1 by lc. This whole thing is under a root and multiplied by t. Then plus another constant c2 times exponential function, same with a minus sign. So minus bracket under root r square by 4l square minus 1 by lc under root times t and bracket close. तो यहाँ पर जो कैपिटल Q हमने यूज किया है, it is the maximum charge that can be on the plates of capacitor. हम एक इनके स्पेशल केसेस देखेंगे. एक तो है नंबर 1 अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन. इसमें डैम्पिंग फोर्स का इफेक्ट होता है लेकिन वो वीक होता है एज कंपेयर टू रेस्टोरिंग फोर्स. तो इसमें जो डैम्पिंग ऑफ द ऑसिलेटर है, इट कॉजेस द ऑसिलेटर टू रिटर्न टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विद एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग टू 0. तो इसमें ऑसिलेशंस होती हैं, but oscillations का amplitude with each oscillation decrease होता है, and after making many oscillations the oscillator comes to rest. तो under damped condition में oscillation होती है. In critical damping, जिसमें damping force का effect exactly बराबर होता है to that of the restoring force, जब सिस्टम को डिस्प्लेस किया जाता है, it returns to its equilibrium position without any oscillation and swiftly. So that means in critical damping oscillation नहीं होती है. And the third case is over damping, जिसमें damping force का effect ज्यादा होता है as compared to that of the restoring force. तो इसमें भी अगर सिस्टम को डिस्प्लेस किया जाए तो इट रिटर्न्स टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन अगेन विदाउट अंडरगोइंग एनी ऑसिलेशन बट स्लोली. तो यहां से हमें यह पता चलता है कि ऑसिलेशंस ओकर ओनली इन अंडर डैम्प्ड कंडीशन. इन केस ऑफ a mechanical harmonic oscillator, the condition for underdamped oscillations is b square by 4m square should be less than k by m.
and its angular frequency is given by under root k by m minus b square by 4m square. Now, in case of LCR circuit, in place of b by m, we have got r by l, and in place of k by m, we have got 1 by LC. So analogously, we can write the condition for underdamped oscillation as that b square by 4m square means r square by 4l square should be less than k by m, that is 1 by LC, which implies L का एक पावर इसको कैंसिल करेगा, तो we will get R square should be less than 4L को इधर ले जाएंगे, तो 4 times L by C. Let us take square root. We get R should be less than, इसका square root आएगा 2 under root L by C. So this is the condition for underdamped oscillations in an LCR circuit. The value of resistor should be less than twice under root of the ratio inductance to capacitance. And then we can write analogously the angular frequency of underdamped LCR oscillations as omega prime equals under root of k by m, that is 1 by LC, minus b square by 4m square means r square by 4l square. Let us do a problem on it. We have got an LCR circuit which consists of an inductor of inductance 0.2 Henry, a capacitor of capacitance 1 microfarad, and a resistor of resistance 800 ohm. What you have to do? You have to determine whether oscillations occur in this circuit or not. I will give you a hint that in a damped oscillator, oscillations तभी होती है when it fulfills the underdamped condition. और यहाँ पे underdamped condition की expression क्या है? That resistance should be less than twice square root of L by C. So you have to check this, that whether resistance is less than twice under root of L by C. If yes, then oscillations can occur. So I leave this problem to you, solve it yourself.